Just 1 minute. Okay, Tejaswini, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So listen, in the last class, we have discussed the Forest Act. So I have given you a brief introduction on Forest Act because it is one of the oldest act which is applicable in India until this act regulates our forest. So basically, the Forest Act is meant for the classification of forest. The classification of forest. Forest is classified into reserve forest, village forest, and protected forest. Then the declaration of village forest is the subject matter. How the reserve forest is declared, because reserve forest can only be declared in the government land, and mostly when the government wants to declare a forest land as reserve forest, at that time lot of complication arises, because inside the reserve forest or inside the um, inside that proposed reserve forest there may be some private land. So complication arises when the government declares a particular forest land as reserve forest, but within that some private land, private rights are there. So the Forest Act, the object of Forest Act is to settle the dispute which arises relating to the rights of the party, rights of the tribal people, rights of the local people, those who are going to affected due to the declaration of reserve forest. So the most important area under reserve forest is how to settle the dispute when a reserve forest is being declared. So I have given you the slides, so you will go through that, where I have systematically I have mentioned the object of the act, because before 1927 Forest Act, earlier we had a forest law, that was Forest Act 1878. So the new Forest Act of 1927 has has considered all other forest rules and law which were prevailing before 1927. So taking into consideration all types of rules, regulations which were prevalent in those days, the Forest Act was enacted. So the object of the act to consolidate the law relating to forest, to regulate to the regulation and the transit of forest produce. That means how the forest produce means the timber, charcoal, or forest produce, how it can be regulated. And the another important area is how revenue can be collected from the forest produce, how to levy duty, how to levy tax, or how to impose tax on the transit of any forest produce, whether it is timber, charcoal, coal, lard, jute, or any forest produce coming from any animals. So this is the Forest Act, and the Forest Act is also one of the lengthiest act. It has 86 sections, but we are not going to discuss all the sections. We will only
discuss some section up to section 33, 34. We will not proceed further. So I have already discussed all those areas regarding the scheme of the act, etc. So under this act, the term forest produce has been defined. The term forest produce has been defined. Forest produce means, or it includes the timber, charcoal, wood, oil, resin. Listen, you will get it from the book, because these are this is coming under the definition part. Under the definition, under section 2, the term forest produce has been defined. The forest produce has been explained. Forest produce includes timber, charcoal, wood oil, resin, natural varnish, bark, lac, mohua, flower, seed, tree, leaves. It also includes the part of the animals. It also includes forest produce, also includes rocks, minerals, limestone, quarries, palm trees, bamboo trees, cane. So forest, anything which is found inside the forest, it comes under the forest produce. Because in 1980, we have enacted, our India government has enacted one act for the conservation of forest. The name of the act was Forest Conservation Act. I think you may come across the Forest Conservation Act. Under Forest Conservation Act, for the preservation and restoration of the forest, lot of restrictions were imposed. What type of restriction? The only or the most important restriction is that use of forest and forest produce is prohibited for non-forest purpose. Use of forest or forest produce is prohibited for non-forest purpose. Non-forest purpose means other than any such purpose which is meant for the forest. ଗଛ ପତ୍ର ଯାହା ବି ତମର ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ ଆକ୍ଟ ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ୍ସ କୁ ନନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପର୍ପସ ରେ ୟୁଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ. If anyone wants to use, then the person has to obtain prior permission from the government. ଯେମିତି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ବାଘ ଛାଲ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ, ମାନେ କି ନଖ, ସ୍କିନ୍, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତମର ଯଦି ବି ଧର କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରାହଉଛି, ବା ଯଦି ତମର ଧର ଜଙ୍ଗଲର କାଠ ତମ ପାଖରେ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମିଲ ଗୁଡା ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଧରି ନିଅ ତମେ ଶାଗୁଆନ କାଠ ୟୁଜ କରୁଛ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ଉପରେ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲାଗୁ କରେଇ ପାରିବ. So whenever you are purchasing any such forest produce, means particularly wood, any forest produce, first you must obtain a appropriate receipt. ତମେ ରସିଦ ଆଣିକିରି ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କିଣିବା ଦରକାର. କାହିଁକି? ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ରହୁଛି, ସିଏ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଜ୍ କରିକି ନେଇଯାଇପାରେ. ଘରେ ଆମେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ, କବାଟ, ଝରକା ସବୁ ଲଗାଉଛେ, ତମର ଯଦି ସେଗୁଡା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ରିସିପ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ. ତେଣୁକରି this is the law which prohibits that use of forest or forest produce for non-forest purpose is prohibited. Okay, so the term forest produce is important because it is defined under Forest Act. And I have already mentioned that under this act we have classified 3 types of forest: reserve forest, village forest, protected forest. And reserve forest has to be declared by the government on government land. Reserve forest where some restriction are to be imposed on reserve forest. Then village forest, particularly the formation of village forest may be in the village land or any forest land belongs to the villages.
village forest may be or may be declared on private land or private land and government land. Here what happened, the regulator to manage the forest or the management of the village forest, the management power is to be given to the local community, is to be given to the village community. That's why any such forest which is surrounding to any village, adjoining to any village, the management of those type of forest, the the power to manage, the rights to manage those forests is being given to the village community or local community. That's why it is termed a village forest. Then protected forest, again protected forest may be on the government land, may be on the private land. But the object of protected forest is that the government has some right over the forest. से जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो जगहटा एमती भी हो पारे भुवनेश्वर टाउन रो किछि पोर्शन ताकू भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाई पारे काहेकि ना सेही जगह रे जो जो गछ पत्र गुडा अछि सेगुडा को गवर्नमेंट सेगुडा को तार रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट रो बा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो रेस्ट्रिक्शन ता ऊपर लागू हबो माने केमती देखो तमरो धरो बाड़ी रे भी आंबो निमो कि तमरो जो गुडा को स्पेसिफाइड प्लांट हमरो मोस्टली हमरो माने प्लांट गुडा को दी भाग कराई छी तमे भी तो प्राय जानि थिबो बॉटनी पिला माने स्पेसिफाइड आ गोटेला नॉन स्पेसिफाइड हेले तमरो कोन ए जो चाकुंडा हार्डवुड यूकेलिप्टस जो गुडा को माने फायरवुड पर्पस से गुडा को हला नॉन स्पेसिफाइड किंतु तमरो आंबो निमो जामु सागवान शिशु गंभारी जेते सब भलो गछ एगुडा कहउची स्पेसिफाइड प्लांट तो स्पेसिफाइड प्लांट जदि भी कहार बाड़ी बगीचा रे अछि बा निज जमी भितरे अछि बिफोर यू कट डाउन दोस ट्रीज यू हैव टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन तमे गछ काटिबा पूर्वरु डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ कोठू रेंजर थ्रू रे तुमको परमिशन आनिबा को पड़िबो सेति पई आमे हमर निज घरे सागवान गछ लगेई थिले भी आमे सागवान गछ को काटी की मार्केट रे आमे बिकी पारु नाहु. Even though everybody knows that it is your land and you have planted that tree and you want to cut the tree for your purpose, but still because it is a specified plant you have to obtain permission. So city pai tomoro jo protected forest re mostly kon ve the government wants to protect that forest land, seta private land ho ba government land ho, government se jaga re interfere karibo. तापरे हमें आसीबा ये जो प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्व फॉरेस्ट सुनो रिजर्व फॉरेस्ट रिलेटेड मु तुमको कहि थिली काली सेक्शन 3 रु सेक्शन 12 13 पर्यंत देखो सेक्शन 3 रे हला कोन डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट 4 रे हला अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर एती हेई गिरी तमरो आसीला कोठी तमे माने नोटिफिकेशन बाय द प्रोक्लेमेशन बाय द forest settlement officer. Forest settlement officer enjoys all the power of a civil court because he is the person who has to decide the dispute. Forest settlement officer is the person who has to decide the dispute arising out of the declaration of reserve forest. आउ थरे कहूची जेते गोटे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करा जाए सेते बेले तमरो जो एरिया रे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करा जाए जे कोनोसी लोकर जदी rights over that reserve forest, right over that proposed reserve forest, if anybody's right is going to be affected, then he may make a complaint to the forest settlement officer, and the forest settlement officer has to settle the dispute. He has to settle the matter. जदि जने एमती भी हेची गोटे एरिया टा रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करा गला से पाखरे गोटे गां अछि से गां लोक माने से फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भितरु पानी नियंती बा तांकर गाई गोरु भितरु को चरेबा पई छडा जाय बा से माने जंगल रु पत्र नियंती से माने जंगल रु मोला माने जो गछ गुडा मरि जाईची से गछरो डाल पत्र आनी कि से माने यूज करंती बा जंगल रु किछि सेमती कलेक्शन करंती. तो ए सब जिंस गुडा जो माने करंती इवन दो दे डोंट हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट तांकर निज जमी रिजर्व फॉरेस्ट भितरे नाही
किंतु they are dependent on that proposed reserve forest एमती भी हो पारे तो से जगह रे जदि को लोक को गां लोक को कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट ऊपर डिपेंड करते so that the forest settlement officer will invite them that if you have any problem, if you have any complaint, then you tell me, you tell us, and the forest settlement officer will acknowledge, will make hearing of those matters, and then the forest settlement officer will allow certain activities to that community, to those people. तो सेटा होची सेटलमेंट ऑफ द राइट्स ओवर द फॉरेस्ट ता छडा जदि को चाषो जमी जाईची ताले से चाषो जमी को हमर सेक्शन 11 में तुमको काली कहिथिली द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर एन्जॉयज ऑल द पावर ऑफ द कलेक्टर all the power of the collector settlement माने सेटलमेंट ऑफिसर से जगह रे लैंड एक्विजिशन हिसाब रे से पावर एंजॉय करिवो एंड ही विल एक्वायर द प्राइवेट लैंड फॉर गवर्नमेंट पर्पस हमर जेमति नेशनल हाईवे चौड़ा हेले कहार जमी जदी पड़ी गला गवर्नमेंट ताको कंपेंसेशन दोची कंपेंसेशन केमति दिए जेति की जमी जाईची सेही एरिया रे जेति की जमी रो रेट से हिसाब रे ताको कंपेंसेशन दिया जाय सेमति तमरो फॉरेस्ट एक्ट अंडर रे जदी तमरो प्राइवेट जमी गवर्नमेंट को जिबा गवर्नमेंट ताको एक्वायर करे ताहले गवर्नमेंट हैज टू पे कंपेंसेशन टू दोज पर्सन आइदर कंपेंसेट गवर्नमेंट में कंपेंसेट बाय गिविंग अल्टरनेटिव लैंड और गवर्नमेंट में गिव सेक्शन 15 section 15 exercise of rights admitted अच्छा एटा कोन देखो जदी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जेते बेले एई जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कला बेले राइट्स रिलेटेड डिस्प्यूट सेटल कला बेले जदी से किछि माने फील कला जे माने एई गारो लोक को तांको गाई चरेबा पई छडा जीवो बा किछि लोकन को सप्ताह रे गोटे दिन काठ काटिबा पई छडा जीवो तो these things shall be recorded what type of rights conferred given to the party everything will be recorded and those people the people those who have been given such right they have the right over the reserve forest जो मान को सही अधिकार दिया जाइथिबो से माने से अधिकार एन्जॉय करि पारि हैला एटा होती सेक्शन 15 अच्छा इफ एनी पर्सन इज एग्रीड आ गोटे सेक्शन अछि सेक्शन 17 रे हला अपील जदी कोनोसी लोक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर रो जो सेटलमेंट कला लैंड एक्विजिशन कला डिस्प्यूट सेटल कला जदी को लोक एफेक्टेड जदी को लोक सैटिस्फाइड नहे जदी को लोक ताको चैलेंज करबा पई चाहूची अंडर सेक्शन 17 द पर्सन कैन चैलेंज बिफोर द एपीलेट अथॉरिटी हैला तापर हम सीधा पढेबा सेक्शन 26 को सेक्शन 26 टिके लेखिनियो एक्ट्स प्रोहिबिटेड इन सच फॉरेस्ट बा तमे एमती लेखो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन रिजर्व फॉरेस्ट এটা পরীক্ষার পড়ে what are the restriction imposed on reserve forest restriction imposed on reserve forest देखो मोस्टली कोन रिजर्व फॉरेस्ट रे कोन रेस्ट्रिक्शन में तमे जो धरो डेरास बुलिबा को जाइतिबो कि हमरो जो चंदका रे जो जंगल अछि ता भीतर को आसीबो फास्ट हला कोन तमे बिना परमिशन रे भीतर को पसी परिबोनी you have to take permission ता माने से गेट रे तमरो ना ना एंट्री हबो किए जाउची केते समय पई राती रे रही परिबोनी राती संध्या पूर्व आसीबो these are all rules अच्छा first thing is that reserve forest within inside the reserve forest no one can clear the plantation
माने क्लियरिंग क्लीनिंग माने फॉरेस्ट जगह को क्लीनिंग करि परिबोनी गछ काटी परिबोनी बुदा सफा करि परिबोनी बा फॉरेस्ट जगह को सफा करिके चाष करि परिबो नाही ता छडा तापरे नेक्स्ट हला दैट कैटल ट्रेसपास विदाउट प्रायर परमिशन यू कैन नॉट अलाउ कैटल ट्रेसपास माने गाय गरु चलै परिबोनी यू कैन नॉट अलाउ द कैटल फॉर ग्रेजिंग करि परिबोनी यू कैन नॉट फेल डाउन ट्रीज तमे गछ काटी परिबोनी तमे गछरु माने खाली गछ काटी परिबोनी नुहे यू कैन नॉट ड्रैग ट्रीज जदि धर गोटे मल्ला गछटे पड़ीची गछटा मरि जाईची तो से जगह डेड वुड तो तमे से डेड वुड टाकू भी ड्रिप वुड टाकू भी तमे बाहर को घोसारी के आनी परिबो नाही गला रेस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू बर्निंग तमे से रिजर्व फॉरेस्ट भितरे निया लगै परिबोनी तमे गछर बकला छड़ै परिबोनी माने restriction you cannot strip off the bark even you cannot collect leaves you cannot do certain things particularly आउ अन्य जिंस भितरे hunting killing एगुडा भी reserve forest भितरे it is protected or prohibited you cannot kill animals you cannot hunt animals you cannot tease animals अच्छा ताछड़ा restriction imposed on all types of quarries means limestone quarry limestone quarry तमरो एटा भी तमे कोन माने limestone quarry all types of mining activities are also prohibited inside the reserve forest and particularly the Elephant Preservation Act 1879 is applicable to the forest act means the restriction imposed on elephant hunting or on elephant is equally applicable to the forest act हैला ताप छडा तुमको आ गोटे जिंस कहिली शिफ्टिंग कल्टीवेशन सेक्शन 10 रे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो रेगुलेटेड दैट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन हला पोडू चासटा भी हमर फॉरेस्ट एक्ट रे ताको रेगुलेट करा है तापर रहिला तमरो ए जो रिजर्व फॉरेस्ट हमें डिक्लेयर करले रिजर्व फॉरेस्ट सेक्शन केते रु केते रिजर्व फॉरेस्ट हला सेक्शन 3 टू सेक्शन 15 रिजर्व फॉरेस्ट सेक्शन 3 टू सेक्शन 15 अच्छा तापरे तमरो विलेज फॉरेस्ट लेखिनियो विलेज फॉरेस्ट सेक्शन 28 विलेज फॉरेस्ट फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट सेक्शन 28 लिसन विलेज फॉरेस्ट तुमको ऑलरेडी मु कहि सारची विलेज फॉरेस्ट केमती हुए विलेज फॉरेस्ट बेसिकली village forest mostly it is declared by the government on the private land or some land belongs to the government and basically the object of village forest is that the management of the village forest the right to manage the power to manage the village forest is vested to the local community it is vested to the right to manage the forest village forest is been vested to the village community where a committee is constituted and the committee is constituted to regulate the village forest you must have heard that there is a concept joint management हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जोटा कि हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ए जो फॉरेस्ट पॉलिसी हेतला तादरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीटा फॉरेस्ट पॉलिसी गोटे हमारा 56 रे हेतला फॉरेस्ट पॉलिसी तापर 88 रे हला तो फॉरेस्ट पॉलिसी रे हमें वी वांट टू प्रमोट द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द origin of joint forest management starts from the village forest. Thank you. Now, joint forest management, if you want to scientifically reserve the forest, manage the forest, conserve the forest, conserve or reserve the forest, then the knowledge of local community, the knowledge of the traditional community is very vital.
The people those who are residing inside the forest, the people those who are residing inside the forest, their knowledge is to be taken into consideration, their knowledge is to be acknowledged in preservation protection of the forest. So the joint forest management means the village community, local community shall participate in the management of the forest. सेमती नुहे जे खाली आईएफएस रेंजर जो माने सरकारी चाकरी पाइले सेही माने जाइकी फॉरेस्ट को खाली मैनेज करिवे से माने पारिबे नाही वर्तमान पर्यंत भी the people those who are residing inside the forest we are taking help from them हठात माने बर्तमान झड़ आसीबो कि बाघ गोटे आसुची सेपटे हाथी जाइची कि नाही ए सब गुडाक केते गुडाक ट्रेडिशनल नॉलेज हमें जेते सीसीटीवी कैमेरा लगेइले भी किछि विलेज पीपल ट्रेडिशनल पीपल अछंती लोकल कम्युनिटी अछंती दे नो दैट जेंति तमे सुनिथिबो जे हमर माने माटी तळे को जगह रे पानी बाहरिबो सेटा किछि लोक अछंती से माने तांकर माने निजर ट्रेडिशनल नॉलेज द्वारा से माने जानि परंती जे हां एठी जदी को कळा हो तले एठी निश्चय पानी बाहरिबो तो एई जिंसटा को तो बतन साइंस बतन हमें चाहे मानु बा न मानु बट दे हैव प्रूव दैट. So this type of knowledge to use the traditional knowledge of the local community, of the village community, that this system of village forest has been developed even before our independence. So village forest is very vital in preservation and conservation of the forest. अच्छा, protected forest हेला तमरो section 29. Section 29 रे तमरो कहूची protected forest. Protected forest means it is a forest land. First thing is that the land must be a forest land. The land may be belongs to private or government. But the rights over the forest, माने सी जगह जार भी हे पारे से जगह रे जहा जहा मिलुची बा जहा जहा अछि ता ऊपरे सरकार रो अधिकार रहिबो. देखी धर एमती तुम जनकर बिल भितर हठात गोटे मूर्ति बाहरला कि जनकर तार चाष जमी भितर किसी गोटे जिनसटे बाहरला तो से जगह कौन से लोक कहबो जे एटा मोर मो जमी भितर बाहर माने मोर नो यू कैन नॉट डू दैट यू कैन नॉट क्लेम दैट तो से जगह कौन से टाइप रो जिनसटे गवर्नमेंट हैज द राइट तेनु करी हमर काली तुम कहउतली राइट टू प्रॉपर्टी हमर नाही हमें राइट टू प्रॉपर्टी अछि केमती माने अप टू ए लिमिटेड स्टेट हमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी ता हमर फंडामेंटल राइट नुहे इट कैन बी रेगुलेटेड बाय लॉ दैट मींस गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एनी लॉ सेति पई हमें जते प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कथा कहूचे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रे बेसिकली कोन हुए ना फॉरेस्ट ता जदियो हम निज प्राइवेट जमी ऊपर भी जंगल अछि किंतु गवर्नमेंट ताको regulate करिवो before you cutting down the trees you have to obtain permission because it is regulated ये एति गेला ता छडा तमरो पेनल प्रोविजन अछि सेक्शन 33 रे सेक्शन 33 रे पेनल्टी अछि आउ केते गुडा से माने ये एक्टा तो बहुत बड़ो हमरो देखो गोटे फुल चैप्टर अच्छी तुम सेक्शन 39-40 रे the government has the power to impose duty on timber and other forest produce ए जो जंगल जात जिंस जंगल द्रव्य जो गुडा हम कहउते गवर्नमेंट ता ऊपरे किछि माने टैक्स बा ड्यूटी से ता ऊपरे लेवी करि पारे बा ड्यूटी इंपोज करि पारे माने जदी जने जंगल गवर्नमेंट एमटी हुए जो आमे धर जंगल लुग में काठ आनुचु धर काहाको परमिशन दिया गला सी कोन हो ना गवर्नमेंट को गोटे अमाउंट से डिपॉजिट करबो सेटा कहउचे हमें ड्यूटी. अच्छा ता छडा गवर्नमेंट टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमें जेते तुम देखिथिबो ए जो बड़ बड़ लॉग गुडा को ताको ट्रांजिट पास कहा जाय बा ताको हमें को पासिंग मा तुम देखिबो बड़ बड़ लॉग गुडा ऊपर गोटे जगह रे गोटे स्टाम्प भलिया मरा हितो जेते बड़ बड़ लॉग सब जाए माने ए जो 100 मिल गुडा को ता ऊपर सब नंबर पड़े जे एई नंबर काठटा
ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସେଟା ହେଲା ଟ୍ରାନଜିଟ। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରେଗୁଲେଟ ଦ ଟ୍ରାନଜିଟ ଅଫ ଦି ଟିମ୍ବର। ଯୋଉ ଯୋଉ ଗଛ, ମଲା ଗଛ ହଉ ବଞ୍ଚିଲା ଗଛ ଗୁଡା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଯେ ନା ଏ ଗଛ ଗୁଡା କାଟିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କଟାଯିବ। କାଟିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏ ନମ୍ବର। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗଛ ଗୁଡା ଉପରେ ସବୁ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସେଟା କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ନମ୍ବର ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ କୁ ଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଟ୍ରାନଜିଟ। ତ ସେଇ ଯୋଉଟା ପାସିଂ, ତ ସେଇ ପାସିଂ ନଥିଲେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଜେ ଘରର ଗଛଟାକୁ ବି ଯଦି ତମେ ଟଲିରେ କି କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛ, ରାସ୍ତାରେ ତମର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଧରିବେ। କଣ ପାଇଁ ଧରିବେ ନା ତମେ ଟ୍ରାନଜିଟ ପାସ୍ ଆଣିନାହ। ଟ୍ରାନଜିଟ ପାସ୍ କିଏ ଦବ? ତମକୁ ସେ ଟ୍ରାନଜିଟ ପାସ୍ ଟା ଡିଏଫଓ ଦେବେ, ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର। ତା ପାଇଁ ତମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ। ସେ ତମର ଜଣେ ଆସିବ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଗଛଟା କଟା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ସେ ଜାଗାର ମାଲିକ କିଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିଟ ପାସ୍ ଦବ ଯେ ଏତିକିଟା ନମ୍ବର ବା ଏଇ ଲଗଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ସେଟା ହେଲା ଟ୍ରାନଜିଟ। ଏଇଟା ତମର ସେକ୍ସନ କେତେ? ସେକ୍ସନ 41 ରୁ 44 ଭିତରେ ଏଗୁଡା ଆସେ। ଗଲା ତାପରେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ 45 ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, that how permission can be given for collection of different forest produce। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ହେଲେ ତ ହବନି। ଦ୍ୟାଟ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା କି କଲେକ୍ସନ ହବା ଦରକାର। So there are some provision that the government will give permission to the local community or the authorized person to collect those things. So ये हला, this is something relating to the Forest Act. So I have already given you the Wildlife Protection Act. This is, I have already given you the slides, and I think you go through all those slides, and tomorrow in one class I will complete it. देखो काली गोटिए क्लास रे तुमको मु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ता नॉट सेल रे कहि देबी, काहेकि ना हमें मु लेंदी करबा पई चाहुनी, जेते जल्दी हबो तमरो एटा को हम सारी दबा। अच्छा सुनो, तमरो जो आउ गुडा को हाजार्डस केमिकल बायोमेडिकल वेस्ट रूल ए जो गुडा को अछि मो पाखरे, ए जो स्लाइड गुडा अछि तुमको सेडा मु देई छी कि सोनाली? No, sir. No, sir. सुनो मु से गुडा को से स्लाइड गुडा को जेमति आज पठेली सेमती फोटो उठेकी पठेई देबी हैला। जो जो गुडा को स्लाइड मो पाखरे अछि मु तुमको सब माने ट्रांसफर कर देबी। तापरे जदि सुविधा हुए तो एमती तमे मझिरे मझिरे कहबो, मु क्लास नहीं नेबी। तमरो परीक्षा केबे? Sir, March end. ना बेटर हबो मु तुमको ए स्लाइड गुडा जेतिकी अछि सेतिकी पठेई देबी हैला। तमे से गुडा को देखिकी किछिटा करि नबो, आ जो जगह रे डाउट हबो मते पचारनो हैला। आ काली किंतु Yes, मु sir. तमरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ता पढी देबी। ओके ओके, Yes, sir. थैंक यू।